थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। आप लोगों ने कितने दिनों बाद एक हीरोइन का डायलॉग पॉपुलर होते सुना है। हीरो के डायलॉग तो आपने सुने होंगे कि आप ये डायलॉग बोलो, वो डायलॉग बोलो। पहले ही फिल्म में पहले ही डायलॉग से ये क्या ये चीज फॉर श्योर, बॉर्डर फॉर श्योर। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। जो झुंझार हो तैयार वही सरदार सा लागे। धार को काटे रे चीर धरे सन्नाटे रे जब वीर भरे हुंकारे हुण हुण दबंग 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 हुण हुण दबंग 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 दबंग। अरे मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। होपफुली अब ये डीवीडी निकल चुकी है तो लोग मुझसे डायलॉग पूछना बंद कर देंगे और फिल्म जाकर देखेंगे। पहली बात तो मैं सलमान के बिहाफ पे आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सलमान इज नॉट हियर, ही वुड हैव लव्ड टू बी हियर, बट अनफॉर्चुनेटली या इट्स वेरी सैड, ही वुड हैव लव्ड टू बी हियर। उनकी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी आंख में थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का क्लॉट सा हो गया है, तो थोड़ा डॉक्टरों ने उनको एडवाइस किया कि ज्यादा एक्सर्ट ना करें, और नहीं तो वो यहाँ कुछ भी करके आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा है मुझसे, आप लोगों से सबसे, कि वो माफी मांगे कि वो इस वक्त यहाँ नहीं आ सके। He would have loved to be here. So anyway, he's there with us, and we would have loved to see all of this. Well, और जोर से बोलो, उनके घर तक आवाज पहुंच जाएगी। और जोर से। खामोश। जी बिल्कुल, उम्मीद तो नहीं की थी, बट कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। अब हर कोई जो फिल्म बनाता है वो सोचता है कि अपनी फिल्म हिट होगा, बट हमने अपना पूरा हार्ड वर्क डाला है, लगन से काम किया है, एंड आई थिंक ये सबका फल जाके मिला है हमें। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिफरेंट फीलिंग, आई स्टिल फील लाइक आई एम इन अ ड्रीम। जैसे सोनाक्षी ने कहा कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबको लगता है कि बहुत बड़ी, मतलब सबको बहुत पसंद आएगा, लेकिन इतना पसंद आएगा किसी को पता नहीं है। वंस रिलीज हो जाती है तो आपको कितना अच्छा लगा ये फिल्म, ये गाना, आप ही बताइए ना कितना अच्छा लगा आपको। तो बस यही आंसर है। हमारी जो पब्लिक है वहाँ पे, दे गिव यू द ट्रू आंसर, द ट्रू रिएक्शन, एंड I think I can take this opportunity to thank our audiences out there from all of us कि आप ही हमारे सबसे बड़े हीरो हो। आप गए थिएटर पे, आपने फिल्म बार बार देखी। I think we should thank you for that. Thank you for going and seeing our film and enjoying our film. स्क्रिप्ट अकेले कुछ नहीं होता, एक्चुअली कुछ भी एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं। स्क्रिप्ट एक बीज है, उस नींव है, बुनियाद है किसी भी फिल्म की। बीज नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा, पर सिर्फ बीज से भी कुछ नहीं होता, उसके ऊपर जड़ें निकलती हैं, पेड़ निकलता है, पत्तियां, फूल, फल सब होते हैं। तो आई थिंक अच्छी स्क्रिप्ट से शुरुआत होती है, उसके बाद एक अच्छा प्रोड्यूसर जुड़ता है उसमें, एक अच्छा डायरेक्टर जुड़ता है, और अच्छी स्टार कास्ट, अच्छे टेक्नीशियन, सब कुछ अच्छा होगा तो ही फिल्म अच्छी होगी। probably say that the DVD has released maybe a week earlier than it should have. Today the times are such that if you know that there's a lot of piracy already there, and there's not much we can do to curb the piracy. The film goes out, once it leaves our hand and it reaches wherever, it's practically impossible to curb the piracy that happens. क्योंकि अगर DVD रिलीज किए तो कम से कम मार्केट में आने के बाद मिनिमम about 3 to 4 weeks for it to start selling, and उतने ही टाइम में आपका सैटेलाइट सपोज आ जाएगा तो फिर DVD मार्केट पे भी अफेक्ट करता है. So there's nothing like earlier or soon. These are all changing trends and changing markets. So there is a possibility even that happening. Maybe some producer will take this the way and say कि very theatrical, because the people who go to the theaters will see it in the theaters. So जब पायरेसी होने ही वाली है तो उससे अच्छा आप एक लेजेंड फिल्म क्यों ना निकालें.
So these are all things that will be developed over a period of time, so you never know. Special features in the DVD include a very interesting, what you saw a snippet of it, of Shatrughan ji doing a tete-a-tete with each and every cast and crew member and taking you through the journey of Dabangg. So I think people who really enjoyed the film will enjoy the making of, because it's a perspective of behind the camera and what the cast and the crew felt about. And there are making of songs and 5 minutes on how each song was shot, so you can actually get a glimpse of how the Muri song was conceived and shot and all of that. So it's got a lot of goodies in it. This question is from Salman Khan. So Mr. Arbaz, you have to just answer the question. Salman inviting Shah Rukh in Big Boss. How am I to answer that? Sir? It's not a really relevant question. Yeah, I was supposed to ask this question with Salman, but he's not here. No, he's not here. So first and foremost, I cannot talk on his behalf. Okay. Secondly, I don't know where is the context of something like that. I don't understand that. I'm not complaining. I love it. Why should I? Whether I'm a Chhaya girl or I'm a Mundi girl, at the end of the day, behind all of that, I'm still Malaika. That doesn't change. But I'm loving being called Mundi. In fact, nobody calls me Malaika anyway. Wherever I go, it will be Mundi. But I love it. I used to hear a folk song in all the weddings in UP, which went by Londa Badnaam Hua Nasiban Tere Liye. Now you must understand, it's a folk song. And folk song, nobody owns the copyright. And there have been several cover versions of this folk song in India and in Pakistan. So I think it's not right for anyone to accuse Lalit Pandit of ripping off anyone's song. If at all, we've borrowed an idea and we've never hidden the fact. I've said it in several interviews. It's an inspiration from there. And it's, if some composer is claiming that it's his work that we've ripped off, it's all false. Once my distributors start disclosing the right figures, then maybe I'll be able to tell you. So it's, abhi bhi chal rahi hai, abhi bhi account so hai, of course the figures are going to come. Of course, it's probably the, it's Three Idiots is right now the highest grosser, which is pretty evident. We're ahead of Gajni from what I believe. Now, I can't exactly tell you the figure, but we're somewhere in between that. So as of now, we're probably the second in terms of the highest grosses. So you can get your calculations from there, one, because I still don't know exactly what the figures are, but we'll probably do about 130 odd crores net in 150 odd crores net in India. So that's a fantastic, and I'll take it because it's my first film and I've got nothing to complain. I think he's reacting like any other father. He's very happy, he's very proud, and I think any parent would feel absolutely proud if their child is better than them or as much as them. So I think he's very happy. You guys want to see Dabangg 2? Yeah! So it's going to happen, it's always on the cards. Alright? And Salman and Sonakshi, you're going to see them again.